This is chapter 15, transport, video number 2. We are reading about airways now. In the previous video, we read about railways and roadways, and now about airways. Civil aviation. Civil mean to say one is civil, another one is for defense department, just like military or air force and all that. The civil means which is used for the civilians, like the local people or the natives of the country. So civil aviation it is under Directorate General of Civil Aviation. The short form is DGCA. I repeat my words that whenever you read this kind of abbreviations, please underline it and learn, because they may come as a question that what do you mean by DGCA. Okay, so that is Directorate General of Civil Aviation. This department is taking care of civil aviation. So the responsibility of DGCA is planning, expansion and implementation of the government policies and other needy requirements to improve and to imply the things. Now, the air transport was nationalized in 1953. It was nationalized in 1953. Please remember, this may come as a question. And Airport Authority of India. There is another abbreviation, it's AAI. So this means Airport Authority of India. It was established on 1st April 1995. The main aim to make Airport Authority of India was to accelerate or to expand or to boost or speed up the trade or integrity or transportation. Now we have two types of airports available. They are international airports and domestic airports. There it is international airports. If we talk about international, there are 15 to 17 domestic, and plenty of international airports are there in India, basically in Amritsar, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, wherever you go, and domestic as well. What are the advantages and disadvantages? We will read these things from book. So the advantages of air transport are: airways are all the fastest mode of transport. 2. Air travel is most indispensable for the business people, for defense, where it is saves lives at the time of calamities like epidemic, earthquake and floods. Air transport has been gaining popularity in spite of its exorbitant rates. Air transport is most significant in hilly regions and border areas which are not easily accessible by surface transport. And air transport is most important in northeast region, where air is only mode of transport because of its difficult terrain. So whenever you are asked about advantages and disadvantages, always remember that you have to write at least 3 points. You cannot go less than 3 points. If we talk about disadvantage of air transport, there is competition. The airlines are facing stiff competition from foreign airlines. Lack of funds, poor quality of service, unaffordable by common man. The airlines tend to serve only a particular sector who can afford the exorbitant fares. These are normally beyond the reach of a common man, and continuous strikes and all that. Talking about Gagan, what is the full form of Gagan? It is GPS aided geo augmented navigation. This is a department. India's satellite based augmentation system, SBAS. S for satellite, B for base, A for augmentation, and S for system, and developed by the Indian Space Research Organization, ISRO. प्लीज एब्रीवेशंस याद रखना, AAI. और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, direct routes, increased fuel savings, and improved approach with the vertical guidance of railways. So ये चीज़ें हैं, intelligently आप इसको पढ़ सकते हैं, but the instructions or the guidelines from the ICSE board must read word to word before you come for exam, because in a small video the whole reading is not possible, but I am giving you the very short points which are very important, which can come in paper.
And talking about waterways are cheapest mode of transport, especially in India. India has a long coastline of 6,000 kilometers approximately. It is a fuel efficient, environment friendly mode of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. Despite of all favorable conditions, water transport in India currently provides only about 1% of the total transport in the country. दो किस्म के ट्रांसपोर्टेशन ब्रॉडली डिवाइड होते हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और कोस्टल शिपिंग। इनलैंड और नेशनल आगे हम दो पढ़ेंगे, एक है इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है नेशनल वाटरवेज। इनलैंड में क्या है, सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन CWTC, it was constituted in 1967. It has headquarters at Kolkata. It is mainly engaged in transportation of goods by inland waterways in Ganga, Brahmaputra, Hooghly and Sundarban। याद रखना ये यही दो तीन चार नदियां हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटरवेज के लिए। ये है IWAI की एब्रीविएशन, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन October 27, 1986। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। नेशनल वाटरवेज में अगर हम बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र आर द ट्रिब्यूटरी स्टिल कैरी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रिवर ट्रैफिक, जिसमें कॉमर्स क्वेश्चन। गंगा जो है 800 किलोमीटर तक नेविगेबल है पटना तक, and Brahmaputra is navigable throughout the year. River carries about 50% of transport between Assam and Kolkata। तो जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे नेशनल वाटरवेज भी होते हैं, नेशनल वाटरवेज 1, 2 and 3। ये है उनकी डिस्क्रिप्शंस। व्हेन यू रीड यू विल कम टू नो प्लेंटी ऑफ थिंग्स। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रैक्टिसाइज की हैं मैं पढ़ दूँ, देख एज अ क्वेश्चन आंसर्स हैं। द बैकवाटर्स सर्व एज मीन्स ऑफ एविगेशन। दीज आर वाटरवेज आर यूज्ड बाय लोकल बोट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स लाइक स्पाइसेस, कोकोनट्स, रॉ रबर, पेपर एंड कैश्यू नट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, सस्ता है, चीप है, यूजफुल फॉर बल्की गुड्स, भारी वस्तुओं के लिए बड़ा अच्छा है, हेल्पफुल इन डिफेंस, डेवलपिंग ऑफ शिपिंग एसेंशियल फॉर द डिफेंस ऑफ कंट्री, देयर इज लेसर पोल्यूशन, हाँ इसका पोल्यूशन बहुत कम होता है। और नुकसान या डिसएडवांटेजेस क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट, स्लो स्पीड है, फेलियर ऑफ मानसून, अगर मानसून नहीं है तो नदियाँ सूख जाएंगी तो फिर वो नेविगेबल नहीं हो पाएगा। मोर रिस्की, ज़्यादा इसमें ख़तरा है, देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर ऑफ सिंकिंग शिप्स ऑफ बोट्स। इन मोस्ट ऑफ द रिवर इन इंडिया फ्लड्स आर कॉस्ट during rainy season, so water current is always torrential, that it becomes difficult to ply boat। Rivers of South India flow in rocky areas, hence they are not fit for flying boats, and diversion of river water, the deforestation, however these all things are there। The major ports of shipping कौन कौन से हैं, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड मोर। और ये सारे वर्ड्स आप पढ़ेंगे तो ये है इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर है national waterways। So national waterways are beautifully explained for different colors and thick lines, you can understand them very nicely। ये महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है। और कोस्टल शिपिंग में एडवांटेजेस ऑफ कोस्टल शिपिंग क्या है, इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, सेव्स फ्यूल, मैनी कोस्टल इंडस्ट्रीज सच एज फिशिंग आर डिपेंडेंट ऑन द कोस्टल शिपिंग। प्रॉब्लम्स में है, इंडियन ports are not well connected with their hinterland, Indian ports are not well planned, there is a heavy pressure on cargo contents and so these things। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंटेंट एनालिसिस इन ब्रीफ को ज़रूर पढ़ें। ये एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझाया होता है पूरा लेसन, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। तो इनको पढ़ लें और इसके जो क्वेश्चंस ये हैं सारे, इनके आंसर्स मैं आपको KYC के थ्रू भेज दूंगा। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।